नमस्कार भाई बहन हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आज बेला मंडल के सोकास और बेला केंद्र के राम मंदिर प्रांगण में महिला दिवस मनाया गया। महिलाओं ने केक काटकर मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया और इस दिन की खुशी जाहिर की। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने और लैंगिक समानता के लिए संघर्ष का दिन है। ये दिन महिलाओं के साहस, शक्ति और योगदान को सम्मानित करने के साथ साथ उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना। ये दिन ये याद दिलाता है कि समानता के बिना प्रगति संभव नहीं है। ये महिलाओं के प्रति सम्मान, प्यार और प्रशंसा व्यक्त करने का अवसर है। आणखी खूप कमी होत आणखीन आपल्या लेडीजला अजून छान समोर करून कामं करता यावे, असे आणखी अपॉर्च्युनिटी भेटावे अशी माझी खूप इच्छा आहे। तुम्हाला कोणतेही काम असलं तरी आपली आता लेडीज मॅडम आहे, मॅडमकडे या। आणखी आमच्यावरी पोहोचवलं तरी आम्ही काम जेवढे शक्य होते तेवढं आम्ही करतो। कुठलंही काम असेल तरी तुम्ही सांगू शकता, आम्ही जेवढं होते तेवढं तर प्रयत्न करतो फॉलो करायला। थँक्यू सो मच। मुलीवर संस्कार होता वापर तेवढेच आपल्या मुलावर संस्कार केला तर आज काय का नाही महिला दिनोत्सव उत्सवासाठी आपण कुठंतरी आपल्या मुलीला जेवढे घरात राहा बाई हे कसं नको करा असं नको करा म्हणून सांगतो ना, त्याच्यापेक्षा नाही का जास्त आपण आपल्या मुलाला नाही का विचार दिले ना, एक आपली बहीण केवढी आहे, आई केवढी आहे, तेवढी दुसरी जर मुलगी दिसत असेल ना ते बी आपल्या बहिणीच्या समान पाहिजे ना। या महिला दिनोत्सव करण्याच्या ऐवजी आपण हे संस्कार आपल्या मुलावर आपण दुसऱ्याच्या मुलावर सांगले तरी त्या महिला दिनोत्सवाच्या जास्त मला वाटतं। कारण मला तर मी इथं नाही का जे आपल्या इथं मी जगाला गावातच होती, हे मला मराठी तेलुगू बोलायचे एक शब्द येत नव्हता। मी मराठी शिक्षण शिकून आहो, 7वी वर्गावर पास आहो। मी आमच्या आईकडे बाबाकडे मराठी शिकले, पण इथे येऊन मी कुठं बोलायला एक तेलुगू भाषा येतात। मी इथं आता बाई सरपंच बाई आहे ना, तेव्हा माहीत आहे वेलगू ऑफिस मध्ये अध्यक्ष पदवी करणे बाई बी केलेली आहे। मी इथं जिल्हा अध्यक्ष कोषाधिकारी काम करताना तेव्हा मला इथं बाई मंडळ आपल्या कलेक्टर जवळ बोलायची काही मिळत आहे। मला तर आपण आपल्या घरवाले आई, सासू सासरे, आपल्या आई वडिलांनी बी एका सुनेला नाही का आई मुलीचं प्रेम केल्याने आम्ही इतके दूर आलेलो आहोत। तसेच नाही का आपण बी सगळ्या मुलावर, मला तर एवढा समजते जास्तीत जास्त मला समजत एकच कारण आपण आपल्या मुलावर नाही का आपल्या लेकीसारखं संस्कार दिला तर आपलं हे महिला दिनोत्सव सार्थ व्हावं म्हणून मी म्हणून घेता। तसेच नाही का सरपंच बाईला मी धन्यवाद सांगते। माता शेनेषु रम्भा वदने शिराशयी అపురూపమైనదమ్మ ఆడజన్మ ఆ జన్మకు పరిపూర్ణత ఇల్లాలమ్మ అపురూపమైనదమ్మ ఆడజన్మ ఆ జన్మకు పరిపూర్ణత ఇల్లాలమ్మ అపురూపమైనదమ్మ ఆ జన్మకు పరిపూర్ణత ఇల్లాలమ్మ మగవాని బతుకులో సగపాలు తనదిగా జీవితం అంకితం చేయగా అపురూపమైనదమ్మ ఆడజన్మ ఆ జన్మకు పరిపూర్ణత ఇల్లాలమ్మ పసుపు తాడు ఒకటే మహాభాగ్యమై బ్రతుకుతుంది పడది పతిలోకమై మగని మంచి కోసం పతిలోకమై సతిని మించగలరా మరే ఆర్పులో ఏ పూజ చేసినా ఏ నోము నోచినా ఏ స్వార్థం లేని आणि सगळ्या जे इथे मोठे आहेत त्यांना सगळ्यांना माझा नमस्कार। आणि अतिथींना पण मंचावर जे अतिथी बसले आहेत त्यांना पण महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना माझ्याकडून।
जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आजपर्यंत आपल्या बेला गावामध्ये सरपंच म्हणून जी पदवी आली होती, स्त्रीला गावामध्ये भाग्यलक्ष्मी मॅडम यांना सरपंचाची पदवी आली आहे. ते पण ती माझी मैत्रीण आहे किंवा आज माझ्या मैत्रिणीला त्याची पदवी आली आहे, त्याच्याबद्दल मला खूप भूषण होत आहे. मी तिला थोडं शाल पांघरणार आहे माझ्याकडून. आणि एक शिष्य असतो, स्वामी विवेकानंदाचा एक शिष्य असतो. स्वामी विवेकानंद शिष्याला बोलवतो आणि शिष्याला म्हणतो की तू इकडे ये. तर स्वामीला शिष्य म्हणतो तू 1 किलो वजन असलेला एक बीट आणि एक शेला घेऊन येशील माझ्याकडे. तेव्हा शिष्य गुरुकडे ते घेऊन येतो. तेव्हा गुरु काय करते, ते बीट एक शेल्यामध्ये बांधून त्याच्या पोटाला बांधून देतो. तेव्हा तो त्याच्या पोटाला बांधल्यानंतर गुरु म्हणतो की तुला हे शेला तुझ्या पोटाला बांधून 9 तास तुला जे काही काम करायचं आहे, तुझ्या दिवसभराचं जे दिनचर्या आहे तुझं, हे तुला बांधून करायचं आहे. तेव्हा शिष्य म्हणतो काय गुरु, मला अशी शिक्षा तुम्ही देत आहे. तेव्हा गुरु म्हणतो की हे शिक्षा नाही रे बेटा, तू बांधून काम करून 9 तासानंतर माझ्याकडे ये. तेव्हा तो ते बांधून जातो घराकडे. त्याचे तो पाणी प्यायला जातो, खाली बसून झाडायला जातो, जेवायला जातो. त्याला काही जेवण जात नाही. त्याला శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి వీరికి మరియు వచ్చినటువంటి మహిళా సోదరిలకు, నా మిత్రులకు అందరికీ కూడా ఈ అంతర్జాతీయ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మహిళా దినోత్సవం జరుపుకోవడము ఎవరు సృష్టించిండ్రు అంటే కాగే జట్కిను అనే ఒక అమెరికా మహిళ తను మహిళల హక్కుల పోరాటం గురించి పోరాడి మహిళలకు హక్కుల్ని కల్పించాలని తను అనుకొని మరి మహిళల దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం అప్పటి నుండి మొదలైంది. మరియు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సరోజిని నాయుడు మన భారతదేశం పరాయి పాలన లోపల ఉన్నప్పుడు పోరాటం లోపల తను ఒక మహిళ. ఆ కాలంలో మహిళలు అసలు గుర్తింపు లేదు, మహిళలు బయటకు వెళ్ళని సమయము. అలాంటి సమయం లోపల కూడా ఆ సరోజిని నాయుడు బయటకు వచ్చి చిన్నపిల్లతను, మరి పెద్దది కూడా కాదు, అప్పుడు నేను ఈ పోరాటంలో పాల్గొంటా, మరి భారతదేశం మనకు స్వాతంత్రం కావాలి అని చెప్పి తను పోరాటించింది. అప్పుడు గాంధీ అన్నాడు, అమ్మ చిన్నపిల్లవు నువ్వు ఏ విధంగా పోరాటం చేయగలుగుతావు, నీ దగ్గర ఏమున్నది, నువ్వేం పెట్టగలుగుతావు అంటే నా దగ్గర 2 బంగారు గాజులు ఉన్నాయి, నేను ఇస్తాను అని చెప్పి అంత చిన్న వయసు లోపల అంత ధైర్యంతో మాట్లాడి మన దేశానికి పోరాటం లోపల పాల్గొన్న గొప్ప మహిళ, మొదటి మహిళ సరోజిని నాయుడు పుట్టినరోజుగా కూడా ఈరోజు మనము మహిళా దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. మరియు ఆమె పోరాటంలో పాల్గొన్నది కవయిత్రి. మరి ఆమెకు మన భారతదేశము భారత కోకిల రత్న అని చెప్పి బిరుదు కూడా ఇచ్చింది. అటువంటి మహనీయులను మనం తలుచుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి శక్తి, అవయవాలు సేమ్, మనం కూడా అంతే. కానీ వాళ్ళు తలుసుకొని చేయగలిగినరు, మనం చేయలేకపోతున్నాం. మనం కూడా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ ఆదర్శాలు ముందుకు తీసుకొని మనం కూడా చేయగలుగుతామనే ఒక పట్టుదల సంకల్పంతో మనం నడిస్తే ఏదన్నా సాధించగలిగే శక్తి మహిళ లోపల ఉన్నది. మరి మహిళ అంటే మరి ఒక శక్తి, మా అంటే మమత, ఈ అంటే हिम्मत, बलम, मरी ला అంటే दिनाचा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. माझं आणि का म्हणजे महिला नसतं तर ह्या आपल्या भारतावर एवढं संख्या प्रगटलीच नसती. आणि महिला करताच महिला हा म्हणून तर आपली एवढी जनता मन, आम्ही उमेद डे म्हणला तर आम्ही सर्वेले लहान आपण उमेद डे नाही राहिलं तर महिला नाही राहिलं तर आणि एवढं भारतावर आणि आता कोणत्याही कामाला महिलाच पुढं. महिला नसतं तर महिला नसतं तर आम्ही
महिला नसतं तर पुरुषाच्या बराबर आम्ही खांद्याला खांदा लावून चालत आहे. महिलाच नसतं तर हे आम्हाला भारताची पदवी भेटली नसती. सावित्रीबाई फुले कशी मग ज्योतिबा खांद्याला खांद लावून सावित्रीबाई फुले झाली असती तर ह्या महिला दिनाच्या निमित्त आम्ही झालं नसतं तर. आणि आता मी बी एक महिला दिनाच्या संदर्भात मी एक शिक्षिका, आमची सरपंचीन बाई झाली, हे वार्ड मेंबर आणि आपले विवो लीडर आम्ही झालेच नसते. हे महिला दिनाचं मला तर आज महिला आणि ह्या महिला नसते तर आम्ही पोलीस कलेक्टर बनले, मिनिस्टर बनले, प्रधानमंत्री मंत्र्यापासून आम्ही आणि महिला असतं म्हणूनच आम्ही सर्वेला घेऊ. आणि महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. महिला विषय चूल आणि मूल हे स्त्रियांना माहीत होतं आणि आता महिला कुठं कुठं पोहोचले. शिक्षिका झाल्या, पोलीस, डॉक्टर, हे सर्व इन्स्पेक्टर, सरपंचबाई, वार्ड मेंबर स्त्रियाच बनल्या. आणि महिला दिनात पुरुषाचे काम नसतात, महिलाच करावं. महिला हक्काने महिलाचं हक्काचंच महिलाच करावं काम. डॉक्टर आहेत. त्यांनी 1886 मध्ये अमेरिकेतील पेन्सिल्व्हेनियाच्या वेमुन्स मेडिकल कॉलेजमधून MD पदवी मिळवली. पाश्चात्य वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय महिला ठरले, ज्यांनी अवघ्या 19व्या वर्षी वैद्यकीय शिक्षण घेतले. धन्यवाद. तोंड बंद केल्यावर श्वासाची जी गरज असते, काळ्याकुट अंधारात प्रकाशाची जी गरज असते, शरीरातल्या रक्ताला वाहण्याची जी गरज असते, तडफडणाऱ्या जीवाला पाण्याची जी गरज असते, गरिबाच्या झोपडीमध्ये चुलीची जी गरज असते, प्रत्येकाच्या आयुष्यात मुलींची तीच गरज असते. प्रत्येकाच्या आयुष्यात महिला दिनांना